In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, how are you today, guys? Fine. Thank you very much indeed. Wish you all the very best of luck. A very good morning, everybody. We're going to start today's lecture number 8 regarding reductions, and some more important reductions are underway today. And let's see, first of all, the reductions. Number 1 is, what are you? Hello, what's the reduction of what are you? Water. And cup of? Cuppa. Cup of? Cuppa. And used to? Used to? Need to? Need. Right. Need to, needa, and need a, needa. दोनों के लिए हम reduce करके need बनाते, need to or need a. All right. The next one is supposed to. So इनको हमने इस्तेमाल किया इन तमाम रिडक्शंस को in very valuable sentences. हमारे कुछ sentences हमारे पास मौजूद हैं जो एग्जाम्पल और सैंपल सेंटेंसेस हैं, उनको हम पढ़ेंगे और फिर आपसे भी कुछ साथ साथ जो है वो हम sentences लेने की कोशिश करेंगे. So let's get started. The first one is, what are you, watcher? Let's use watcher in a sentence. What doing tonight? What are you doing tonight को what you doing tonight? आज रात क्या कर रहे हैं आप? What doing tonight? Doing का भी जो G है उसको हम डिलीट करेंगे, बहुत माइनर बोलेंगे. What doing tonight? आज रात क्या कर रहे हैं आप? What are you doing tonight की बजाय what doing tonight आपने इसको रिड्यूस करके बोला रिडक्शन की सूरत में, और इससे क्या हुआ, आपकी फ्लुएंसी लेवल बढ़ा है और आपका फास्ट जो स्पीकिंग है. अब एक्चुअली हम नेटिव स्पीकर्स को समझने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं और समझते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो लिस्टिंग की. जैसे पहले बताया जा चुका है कि समटाइम्स we can speak, we can interact with the foreigners. The problem occurs when we are unable to understand what they are speaking, और हमारी listening इतनी अच्छी नहीं होती, strong होती. The major factor in understanding their listening is, their speaking is our weak listening skill, और वो उसमें reductions को ज्यादा, contractions को ज्यादा इस्तेमाल करती हैं. Okay, so let's get started. हम watcher के sentences बनाते हैं जी, लेते हैं from you guys. Watcher studying in Genius Institute Lahore. Watcher studying in Genius Institute Lahore. For example, IELTS कर रहे हैं या spoken English कर रहे हैं. Watcher studying at Genius Institute Lahore. Yes, please. Watcher. All right, no problem. Okay, watcher. What you're thinking about your future plans? What you're thinking about your future. आप future के बारे में सोच क्या रहे हैं? What you're talking about myself. What you're talking about myself. आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? Yes, please. Hello. Your sentence. What you're doing in classroom. What you're doing in the classroom. आप classroom में क्या कर रहे हैं? All right. What you gonna do when they come to see you? So, sorry? What you gonna do when they come to see you? What you are gonna do. What you're gonna do. What when they come to see you. Gonna का इस्तेमाल भी है और watch का इस्तेमाल भी है. Very nice. What you're waiting for, we have got to go. What you're waiting for. What आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? We've gotta go. Gotta means यहाँ must की सेंस में है. शाबाश, हमें जाना है, जरूर जाना है. जी, hello. What are you doing in this town? What are you doing in this town? आप इस town में क्या कर रहे हैं? All right. So there are sentences regarding watcher. Cup of tea. हमारा model sentence है. We need cup of tea. We need a की sense में है. Need a के लिए इस्तेमाल होता है. और need a और need to दोनों के लिए. Need to को हम separately deal करेंगे. I need a cup of tea. मुझे एक cup of tea की जरूरत है. Need. She's going downstairs to take a cup of coffee. She's going downstairs. वो नीचे जा रही है. To take a cup of tea. He ordered a cup of coffee. He ordered a cup of coffee at Tim Hortons or Second Cup or Gloria Jeans, maybe. Or in England, no.
There are some more important coffee chains, all right? I would like a cup of coffee in this cold weather. I would like a cup of coffee in the cold weather. ठंड में cup of coffee लेना चाहेंगी, शाबाश. The steaming cup of soup provided comfort on a chilly evening. My God, wonderful sentence. The steaming cup of coffee, भाप उड़ रही है जिस cup of coffee से, steaming cup of coffee, provided comfort On a chilly evening. on a chilly evening. सर्द शाम में भाप निकलते हुए cup of tea ने, cup of coffee ने comfort दिया. शाबाश. Excellent sentences. Now the next one is used to. Used to past habit के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद भी first form इस्तेमाल होगी to के बाद. So used to की बजाय used to. We used to play in the sunshine. हम धूप में खेला करते थे. We used to work hard for our examination. हम इम्तिहान के लिए मेहनत किया करते थे. जी. I used to be a long distance runner in my teenage. A long distance runner in my teenage. I used to be, मैं हुआ करता था, a long distance runner, distance runner in my in my teenage. I used to play basketball. I used to play basketball. मैं basketball खेला करता था. Excellent. I am a teacher, so I am used to speaking in public. Oh my God, am used to speaking. ये एक थोड़ा different इन्होंने आपको structure दिया है. Is be used to first form ing वाला. Habitual हो गए हैं. जिस चीज का आप habitual हो जाते हैं, उसके लिए be used to first form ing लगाते हैं. Be से मुराद is हमारे present में, was और past में, will be future में. So I'm being a teacher, I'm used to Speaking in public. स्पीकिंग इन पब्लिक में बोलने का आदी हो गया हूं उस्ताद होने की के हवाले से. आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश इन द पब्लिक. वेरी नाइस. We used to live in a small town. वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल टाउन. स्मॉल टाउन, स्मॉल, टॉल, ऑल, मॉल, नॉट. ये इसका साउंड इस तरह से होगा. वी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल टाउन. हम छोटे टाउन में रहा करते थे. शाबाश. नेक्स्ट वन इज नीड टू. Need to, need a, need a, need a, need to, need a. They need to work hard for success. उन्हें कामयाबी के लिए मेहनत करने की जरूरत है. Need a, yes please. You need to clean out the room first. You need to clean out the room first. You need to clean out the room first. आपको कमरे को पहले साफ करने की जरूरत है. Yes please. We need to find someone to solve this problem. We need to find someone to solve this problem. हमसे तो भारी है मसला, हमसे नहीं हल हो रहा. So we need to find out someone to solve this problem. शाबाश. She need to learn English. She need to learn English. उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. Need जरूरत है. She need to learn English. She need to speak English fluently. उसे fluently English बोलने की जरूरत है. She need to work hard. उसे मेहनत करने की जरूरत है. Right? I need to spend more time with my family. I need to spend some more time with my family. मुझे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है. शाबाश. Excellent sentences. The number 5 is supposed to. Supposed to, first form इस्तेमाल करें. Supposed to means, supposed to mean be expected to. असल में होना चाहिए be supposed to. Be is about was, were, will be, present, past, future में, और be supposed to के बाद first form तवक्को की जाती है. Supposed to, be supposed to. I am supposed to start a new job. मुझे एक नई जॉब आगाज करने की तवक्को की जाती है. I'm supposed to start a new job. Yes, please. Let's find some more sentences. I was supposed to meet my friend for lunch, but they cancelled at the last minute. My God, so sad. I was supposed to meet my friend for the lunch, but he cancelled at the last moment. आखिरी वक्त में cancel कर दिया. All right, very bad. I supposed to go to the store, but I forgot my wallet at home. ये वॉलेट भूलने की बीमारी इसकी पुरानी है. ये जब भी जाता है लोगों को कि मैं आपको लेके दूंगा कुछ सामान, तो उसके बाद फिर जो है वॉलेट कहते भूल गया हूं, ताकि दूसरे पे करें इसके लिए. वेरी नाइस. जानबूझ के किया आपने. जानबूझ के करने के लिए विलिंगली, नोइंगली और विटिंगली भी इस्तेमाल करते हैं. डिलिबरेटली भी इस्तेमाल करते हैं. डिलिबरेटली, जानबूझकर. आई फॉरगॉट माय वॉलेट at home. Deliberately, जानबूझकर, knowingly, willingly or deliberately. Very good. Shabash. The weather is supposed to be nice this weekend. The weather is Supposed to be nice this weekend.
The weather is? Supposed to be nice. Be nice. हाँ, the weather is supposed to be nice. The weekend, weather से तवक्को की जाती है कि वो इस weekend पे अच्छा होगा. शाबाश. I'm supposed to meet my friend at 5 p.m. I'm supposed to meet my friend at 5 p.m. किसको 5 बजे का टाइम दिया है? Alright, जी. उससे इसने कहा है कि आज की शाम मेरा नाम करो. Okay, शाम का कुछ एक पहर मेरा नाम करो. Alright. The train was supposed to arrive 20 minutes ago. The rain was supposed to. The train was supposed to arrive 20 minutes ago. The train was supposed to arrive 20 minutes before. ये पाकिस्तान की ट्रेन तो नहीं हो सकती कि 20 मिनट पहले पहुंच जाए. वो 20 मिनट पहले नहीं पहुंची होगी. वो 23 घंटे 40 मिनट लेट होगी पहले पिछले दिन के लिए. ये ऐसा होगा. अदरवाइज पाकिस्तानी ट्रेन तो माशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेन हैं. और very good. Train system has become a bit better over the years. बेहतर हो गया हमारा train system, and we wish all the very best for the future government, whosoever comes and takes over. और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग, you must be very cautious while casting your vote for the right and upright people. God bless you. Thank you very much. Inshallah, going to see you with new reductions in the next class. Until then, take care. Bye-bye.